तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी उस पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं। इसका जो पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ नैनो पार्टिकल्स? ऑप्शन ए 1 to 100 नैनोमीटर्स, ऑप्शन बी 100 to 500 नैनोमीटर्स, ऑप्शन सी 1 to 100 माइक्रोमीटर्स, ऑप्शन डी 0.1 to 10 नैनोमीटर्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 to 100 nanometers. Now the second MCQ, which of the following is not an application of nanotechnology? Okay, इसका जो पहला ऑप्शन है ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन हेल्थ केयर, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट मटेरियल्स फॉर एरोस्पेस, ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी नैनो स्केल सेंसर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये डेफिनेटली हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं। इसका जो एक ये है ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन हेल्थ केयर, ये इसका डेफिनेटली एक ऑप्शन है, ये इसकी डेफिनेटली एक एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट मटीरियल, नैनो टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई थी, इसकी जो एप्लीकेशन है टू मेक लाइट वेट मटीरियल्स फॉर एरोस्पेस एंड अदर थिंग्स। ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, अगर हम ये ऑप्शन देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है। ठीक, तो नैनो स्केल सेंसर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेटली ये इसका ऑप्शन है। तो इसका जो लेकिन एज पर द क्वेश्चन जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन। नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हेल्थ केयर में इस्तेमाल होता है, मटेरियल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। विच टेक्निक इज प्राइमरली यूज्ड ऑब्जर्व नैनो पार्टिकल्स? ठीक, तो इसमें से कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज नैनो पार्टिकल्स? तो अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्शन बी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑप्शन डी इज अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है ये हम वाइडली इस्तेमाल करते हैं एनालाइज एंड ऑब्जर्व करने के लिए नैनो पार्टिकल्स को एट नैनो लेवल पे। इसके अलावा भी दो टेक्निक्स है, जैसे ऐसी मैंने स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, टीएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दे आर अदर टूल्स टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व दिस नैनो पार्टिकल्स। What is the principle behind the carbon nanotubes high tensile strength? Option A metallic bonding, option B strong covalent bonds between the carbon atoms and hexagonal lattice, option C weak van der Waals force, option D hydrogen bonding. The correct answer for this is strong covalent bonds between the carbon atoms in hexagonal lattice. इस चीज़ से क्या प्रोवाइड होती है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से? ये इसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड देन स्टील बाय वेट। Which organization in India oversees nanotechnology research and development? Option A ISRO, option B CSIR, option B CSIR, option C Nano Mission under DST, option D DRDO. The correct option for this is Nano Mission under DST. ये जो नैनो मिशन अंडर डीएसटी है, ये नैनो मिशन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सपोर्ट ये क्या सपोर्ट करता है? रिसर्च, डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन अक्रॉस इंडिया। Which of the following material is commonly used in quantum dots? Option A silicon, option B graphene, option C cadmium selenide, option C zinc oxide. The correct option for this is cadmium selenide.
जो कैडमियम सेलिनाइड है ये वाइडली वो एक मटेरियल है जो इस्तेमाल होता है क्वांटम डॉट्स में। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सीलेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, एनेबलिंग एप्लीकेशन इन डिस्प्ले, इमेजिंग एंड फोटो वोल्टिक्स। What is the main advantage of nanotechnology in medicine? Reduced side effects of drugs. Option A. Option B is faster wound healing without antibiotics. Option C is complete eradication of infectious disease. No requirement for option D is no requirement for diagnostics. The correct option for this is reduced side effects of drugs. इसमें क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एनहेंस करता है ड्रग डिलीवरी को, प्रिसाइजली एक्ट करता है डिजीज सेल्स को, मिनिमाइज करता है हेल्थ टिश्यूज हार्म करने जो हम अगर हार्म होगा हेल्थ टिश्यूज वो मिनिमाइज करता है, रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंटली। Which of the following is a challenge in using nanotechnology? Option A, limited applications in agriculture. Option B, difficulty in scaling up production process. Option C is lack of interest in scientific community, and option D is poor electrical conductivity of nanomaterials. The correct option for this is limited. Sorry, limited. Option A, limited. Sorry. It's not an option A. It's option B, difficulty in scaling up the production process. Definitely offer करता है significant potential challenges include scaling up processes for mass production while maintaining their cost effectiveness and preciseness. What does the term self-assembly refer to in nanotechnology? Option A, atomic repair of damaged nanoparticles. Option B, organization of molecules without external guidance. And option C is synthesis of nanoparticles in automated reactors. Option D is creation of 3D nanostructures using lasers. सेल्फ असेंबली आएगा तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एक्सटर्नल गाइडेंस। The Nobel Prize in Chemistry in 2016 was awarded for research in which area of nanotechnology? Option A, molecular machines. Option B, nanomedicine. Option C, carbon nanotubes. Option D, quantum computing. The correct option for this is molecular machines. Which of the following is an example of top-down approach in nanotechnology? Option A, lithography. Option B, self-assembly of molecules. Option C, sol gel processing. Option D is colloidal synthesis. The correct option for this is lithography. Lithography में क्या होता है? It is a top-down approach where bulk materials are attached or shaped into nanoscale patterns commonly used in semiconductor manufacturing. In which Indian city is the Center for Nanoscience and Nanotechnology located? Option A, Bangalore. Option B, Pune. Option C, Chennai. Option D, Hyderabad. The correct option for this is option C, Chennai. Which nanomaterial is commonly used for water purification? वाटर प्योरिफिकेशन में कौन सा इसमें नैनो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, कार्बन नैनो ट्यूब्स. ऑप्शन बी, ग्राफीन ऑक्साइड. ऑप्शन सी, टाइटेनियम dioxides. Option D is silicon dioxides. The correct option for this is graphene oxides.
ग्राफीन इसमें वाइडली इस्तेमाल करते हैं हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ड्यू टू हाई सरफेस एरिया and ability to absorb contaminants like heavy metals, organic pollutants, and microbes. What is a potential environmental risk for nanotechnology? Option A, depletion of ozone layer. Option B, bioaccumulation of nanoparticles in the food chain. Option C, increased emission of greenhouse gases. And option D is erosion of soil quality. The correct option for this is that is the bioaccumulation of nanoparticles in a food chain. Nanoparticles can persist in the environment and enter ecosystem potentially by accumulate in an organism causing ecological and health risks. What does the quantum confinement mean in the context of nanotechnology? Limitation of nanoparticle production, restriction of electron movement to nanoscale region, reduction in material stability at small scales, confinement of energy with a nanomaterial. The correct option for this is option B. Restriction of electron movement to a nanoscale region. Quantum confinements occur when electron motion is restricted to a nanoscale region, altering energy levels and properties of material. It is significant in quantum dots, their optical behavior. Quantum computers में इस्तेमाल होता है. So these are all the MCQs with respect to the nanotechnology.